आउ आमे कहितले एटा पार्ट 4 रे अछि आर्टिकल 56 रो 51 ओके आयरलैंड रो अछि जे कहले एंड फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री ए वर्ड गुडा मन रखिबो ताने सब गुडा गोटे गोटे क्वेश्चन पड़थला फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री देन एटा में कहले वेलफेयर स्टेट कथा कहूची वेलफेयर कांसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट कहूची कोठी ना हमरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे नेक्स्ट क्वेश्चन आउटे पड़ितला हमरा जे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ओडा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ले नाही अब ओके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कोडा नहे देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड होचे हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ले नहे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन तामे कहिले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ता तीनिटा गोटेला सोशलिस्टिक आउट हैला कोन ना गांधीयन आउटे लिबरल इंटेलेक्चुअल so equal pay for equal work la equal justice and equality to poor au prevention of concentration of wealth ei tinita देखो हमर रहउची कोठी ना सोशलिस्टिक रे यूनिफॉर्म सिविल कोड रहउची लिबरल इंटेलेक्चुअल रहउची कोडा नुहे आंसर कोन हबो ना एटा हेजो हमर करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म सिविल कोड इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगैलिटी टू पुअर कितना नंबर आर्टिकल 39 वेरी गुड कितना नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतला इक्वल जस्टिस एंड इक्वालिटी टू पुअर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे हमरा ऐड हेतला ओके सो कोडा नुहे पचारिछि तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नुहे which part of the constitution declare the idea of welfare state परीक्षा रे पढितला यूपीएससी प्रीलिम रे भी क्वेश्चन पढितला एंड एटा भी पढितला हमरा directive principle of state policy okay directive principle of state policy in the Indian constitution were borrowed from which constitution कोठु irish constitution आउ आयरलैंड वाला कोठु कॉपी करथिले स्पेन सो हमें कॉपी करथिले आयरलैंड वाला कॉपी करथिले स्पेन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन concentration of wealth is a violation of कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जन हाथ हमर वेल्थ ता रहिबा कथा नहे तो आंसर कोन हबो ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सो 2 है जबा करेक्ट आंसर which of the following is the directive principle of state policy फॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत कितना नंबर आर्टिकल अछि आर्टिकल 40 तो एटा कोई प्रिंसिपल आसुची गांधीयन प्रिंसिपल आसुची ओके आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा कहउतले पढितला ओके दिथर पढितला यूपीएससी रे भी क्वेश्चन पढितला फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत हमें कहउचे गांधीयन प्रिंसिपल हमर रहिला ओके प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमें जानिचेला कितना नंबर आर्टिकल 21 आउ राइट टू प्राइवेसी ए वर्ष पढितला यूपीएससी 2024 रे पढितला ओके राइट टू प्राइवेसी भी हमर होची आर्टिकल 21 ओके राइट टू मैरी भी आर्टिकल 21 ओके राइट टू क्लीन एयर क्लीन वाटर तो एडा कोथरे आसीबो 21 ओके तापरे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कितना नंबर फंडामेंटल राइट अछि 29 और 30 ए दीटा का हमर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी कथा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी परीक्षा रे पढितला आर्टिकल 17 which of the following provision is a part of both directive principle of state policy and fundamental duty
कौन आंसर तेणु समस्त आंसर कहते बी शिप्रा देवव्रत लिप्सा श्रीजय अविनाश भक्त ओके करेक्ट आंसर होची बी 48 ए कोन 48 ए आर्टिकल नंबर 48 ए तमरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे कोन अछि एडा अछि एंड तमरा फंडामेंटल ड्यूटी रे भी गोटे तमरा एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट रिवर लेक्स एडा को प्रोटेक्शन करा जाउछि तो बोथ एटा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज बोथ हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आउ फंडामेंटल ड्यूटी रे अछि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री हमें कहिथिले ओनली एटा डीपीएसपी रे अछि केते नंबर आर्टिकल एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आस्तला ओके 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आस्तला एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट आस्तला 48 ए 48 ए केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे आस्तला 42nd ओके मने रखि भाई जोटा परीक्षा रे पडुचे एटा भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आसीतला ओके तो एटा गोटे आउ 39 ए भी हमरा 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे आसीतला ओके गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ओके एटा फंडामेंटल ड्यूटी रे ओनली अछि केते नंबर हमरा अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेतला परीक्षा रे पडितला 86 अमेंडमेंट वेरी गुड 86 अमेंडमेंट एक्ट केबे 2002 गोटे थरा पडितला जे हमर जो फ्री आ कंपलसरी एजुकेशन 6 रु 14 वर्ष पिला को दिया जाउची आर्टिकल 21 ए रे अछि केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे 86 अमेंडमेंट एक्ट केबे हेतला 2002 ओके एंड आउ गोटे हमें कहले जे इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल एटा भी गोटे फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कराई जे डीपीएसपी रे गोटे ऐड करा जायछि जे 0 टू 6 इयर्स पिला मानकू सेटा थला 6 रु 14 वर्ष फ्री आ कंपलसरी एटा 0 टू 6 इयर्स पिला मानकू हमर यारली चाइल्डहुड केयर दिया जिवो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रा केते नंबर आर्टिकल ले ना आर्टिकल 45 रे यूनिफॉर्म सिविल कोड ओनली हमर डीपीएसपी रे अछि 44 रे ओके सो नाउ कमिंग टू हु इज अमंग द फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी एइथरु कोउडा हमर गांधीयन प्रिंसिपल अछि ओके एटा सीजीएल रे पडितला ओएससी सीजीएल रे कोन ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत जानि छ तमे आर्टिकल 40 ओके यूनिफॉर्म सिविल कोड होछ हमर लिबरल इंटेलेक्चुअल रे अछि ओके तो तीनटा तो हबनी ना नहीं तीन हबनी तमरो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कथा कहिथिले 1 भी हबनी ओके सो 1 और 3 जो थरे अछि काटी दियो ओके तापरे सिक्योर ए लिविंग वेज एटा हमर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल तो आंसर कोन हबो ना ओनली 2 हेजबो करेक्ट आंसर ओके ओनली 2 हेजबो हमर करेक्ट आंसर वेरी गुड जो माने 2 कहिछ समस्त आंसर ठीक अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट Indian Constitution has both justiciable and non-justiciable rights. Directive principle are the rights which are non-justiciable in nature. Directive principle are supplementary to fundamental rights by providing for political and economic rights. कोउटा आ भितरु ठीक कौन को समस्ते 1 and 2 समस्ते कहउछंती 1 and 3 भी कहउछंती सीजीएल रे क्वेश्चन एटा पड़तो
देखो हमरा देखो फंडामेंटल राइट हो पॉलिटिकल जस्टिस दोची एटा को जस्टिस दिए सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस कथा कह जाउची एठी कोन लिखा है जी प्रोवाइडिंग पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स कथा नहीं तो तीनटा हमरा रॉन्ग अछि प्रोवाइडिंग हमर पॉलिटिकल नहीं तो एटा सोशल और इकोनॉमिक सो तीन जो थ्री अछि काटि दियो ओके तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल तो जस्टिसेबल हो फंडामेंटल राइट्स नॉन जस्टिसेबल है कौन ना डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द राइट्स व्हिच आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर ओके नॉन जस्टिसेबल इन नेचर तो कौन हम ताले आंसर तो मोस्ट प्रोबेबल हमर 1 and 2 हिजबो हमर करेक्ट आंसर ओके 1 and 2 हिजबो करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following statement is or are correct with respect to fundamental right and DPSP कौन हबो सना 1 and 2 बुबन लायत्मिका श्रीजय सागर प्रियंका लिंगराज सोनाली पपुन गीतांजलि ओके समस्त कहते 1 and 2 देखो 1 and 2 ठीक अच्छी कहीं ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी टा कोन हमें कहले दीटा जिंस सोशल आउ को कोन कहले इकोनॉमिक सोशल आउ इकोनॉमिक वेलफेयर कथा कहूचे हमर कोडा ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट टा कोन कहूची ना पॉलिटिकल जस्टिस कथा कहूची तेणु एटा जते आमे कहिले सोसाइटी रो डेवलपमेंट पई गोटे स्टेट रो डेवलपमेंट पई गोटे वेलफेयर स्टेट आमे करिया पई तो तार सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रो एटा मोस्ट प्रोबेबल तमे सेति पई देखो तार जो भांगी जाईची तमरो सोशलिस्टिक व्यू गांधीयन भी हमर जो देखाउतले सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू रो किबा इकोनॉमिक एथिरा में कहले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एटा गोटे इकोनॉमिक जस्टिस कथा कहला ओके एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल भी हमें बोथ सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू रो एटा हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कथा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स हमें कहले फंडामेंटल राइट कहा दिया जायछि इंडिविजुअल राइट्स दिया है फंडामेंटल राइट्स कौन पे आपको फंडामेंटल राइट कहा जाउछि ना गोटे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमन गोटे मनुष्यर डेवलपमेंट हबा पई दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स दैट शुड बी गिवन टू ए मैन तो ये राइट्स गुडा को फंडामेंटली दिस इज द फंडामेंटल तमरा फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स वन शुड बी गिवन टू ए पर्सन तमरा फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन तम भाबो तमर जदी फ्रीडम ऑफ स्पीच न थांता तला हमर अवस्था में किछि कहि पार न थांते गवर्नमेंट तमे भाबो जो नॉर्थ कोरिया रे तमे तांकर रूलर को अगेंस्ट किछि कहि परिबो ओके दे विल टेक एक्शन हमें तो किछि भी कहि दोचे हमर कोनोसी नेता भी हुअंतु तमे क्रिटिसाइज करि परुछ ओके तो हमर फंडा जो जदी फ्रीडम ऑफ स्पीच न थांता हमें न्यूज वाला जदी हमर न था जेम चाइना तांकर रेस्ट्रिक्शन न्यूज ऊपर हमर न्यूज ऊपर केही भी किछि कहि परिबे ओके जदी हमर फ्रीडम ऑफ रिलीजियन न थांता तमे भाबो मु जहा चाहू छी जो धर्म को नवा पई तुमको रेस्ट्रिक्शन जदी करा है जाय ताल कोन हमरो डेवलपमेंट कोन होता ना हमें ओडे फ्रीली थिंकिंग करि पार न थाने फ्रीली बंची पार न थाने ओके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जदी न थांदा चाइल्ड लेबर को बैन करा जाय न थांदा तो यही सब गुडा को जदी राइट्स हमको दिया जायछि बोली हमर डेवलपमेंट होउछि जदी एई राइट्स गुडा को काहा को दिया जायछि इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन को फॉरेनर किछि अछि फॉरेनर माने को तो सिटीजन माने को दिया जायछि और इंडिविजुअल लोकन को दिया जायछि अगेंस्ट काहार ना अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट तो स्टेट जहा चाहिबो से एक्शन नहीं परिबन स्टेट जदी कहबो जे तमे पार्टी चुप करी के बस मु जाई कि कोर्ट रे केस कर देबी गवर्नमेंट ना रे कि से ऑफिसर ना रे जे हु आर यू टू टॉक मी टू स्टॉप योर माउथ कि मोर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि मु तो कहि परिबी ओके वॉइस रेज करि परिबी तो फंडामेंटल राइट ए स्टेटमेंट तमरो यूपीएससी प्रीलिम रे भी पढितला फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू द सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द स्टेट सेकंड फंडामेंटल राइट पुट लिमिटेशन ऑन द स्टेट एक्शन
जे स्टेट जहाँ चाहिए एक्शन नहीं पारिबनी तमरो इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट अगेंस्ट अदरवाइज मु जीबी केस स्टेट अगेंस्ट रे केस करबी कोठी सुप्रीम कोर्ट रे केते नंबर आर्टिकल रे 32 रे so 32 रे आई कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर हाई कोर्ट को जाई परिबी केते नंबर आर्टिकल रे 226 रे मु हाई कोर्ट को जाई परिबी तो सेति पई फंडामेंटल राइट पुट लिमिटेशन ऑन द स्टेट जहाँ चाहिए हम नहीं परिबो नाही एक्शन किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर the positive instruction to the state जे state को कुहा जाउची जे तमे गोटे सोसाइटी रो डेवलपमेंट पई सम स्टेप्स नियो तो एटा हमरो ठीक अछि फंडामेंटल राइट आर अमेंडेड यस फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड आउ अमेंडेड इज 21A हमरो 86 अमेंडमेंट एक्ट ऐड हेची बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट अमेंडेड की कहिला हमर तो ऑलरेडी 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे 3-4 टा करिছে 44th रे भी हमरो गोटे अमेंडमेंट एक्ट ऐड हेची 86 अमेंडमेंट ऐड हेची तो ए डीटा का अमेंडेड हे परिबो ओके तो आंसर कोन हे जिवो when and which committee suggested the justiciable and non justiciable type of rights को कमिटी को जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल कांसेप्ट नहीं कह सकते ओके तेन को कमिटी एटा मने रखिबो साप्रू कमिटी ओके साप्रू कमिटी हमर एटा नहीं के आसी 1945 रे तेज बहादुर साप्रू ओके 1945 रे हमरा नहीं के आसी ओके तेज बहादुर साप्रू 45 रे नेक्स्ट होची which are the ideal that a state must keep in mind while framing the policy call जते हमरा ओडे स्टेट किसी पॉलिसी तैयारी करिवो सो एई गुडा हमर डायरेक्शन दिया छै एई डायरेक्शन ने हमर पॉलिसी गुडा तैयारी करिवो सपोज हमें कहिबा हमर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट हमें ओडे डायरेक्शन गोटे कहिले तापे हमर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आसी ओके तापरे हमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आसी सब गुडा आसी नै धर हमें कहबा लिविंग वेज लोक माने को हमें तांकर लाइवलीहुड ए पई हमें लिविंग वेज प्रोवाइड करिया केमिति प्रोवाइड करिया गवर्नमेंट सेति पई लॉ नै के आसी हमें कहले एमजी नारेगा हमें कहले जो थरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तेनु डायरेक्शन हैला जे से माने को लिविंग वेज केमिति दबो सेति पई गवर्नमेंट कोन करूची ना एमजी नारेगा नै के आसीला कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अर्बन लाइवलीहुड मिशन की मिशन शक्ति एई सब गुडा को गवर्नमेंट पॉलिसी नै के आसी कोन पई ना लोक माने को लिविंग वेज आउ से मानकर इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करिया पई सो एई जोडा कहला द आइडियल्स दैट ए स्टेट मस्ट बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द पॉलिसी कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डीपीएसपी कौन हो बेटा ओनली टू बहुत लोग होछथि किछि कहउछथि बोथ प्रियंका बोथ रश्मिता बोथ हाँ कौन हम आमे कहिथिले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे आमे जो कहउथिले सेते बेले जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जायतिला का को दिया होतला ना गवर्नर जनरल डिफरेंट गवर्नर माने को जो और ब्रिटिश पार्लियामेंट रो डिफरेंट गवर्नर और गवर्नर जनरल माने को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाउतला परे सेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अडॉप्टेड करागा ओके तो एते बेले जो हमरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हैतिला सेटा डीपीएसपी नहीं किंतु सेते बेले इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिया होतला परे सेटा हमरा कोन ना डीपीएसपी हिसाब रे ऐड करा गला एंड डीपीएसपी तमे जानि छ जे नॉन जस्टिसेबल दिस इज नॉट लीगली एनफोर्स तो सेही पॉइंट ऑफ व्यू रे भाबिले हमर आंसर कोन हबो ना बोथ हे जबो तमरा करेक्ट आंसर ओके तो एडी बुलेई की पकेई छी एक्चुअली दिस कांसेप्ट वाज ए कांसेप्ट जो कहि छी
तो ये जो कांसेप्ट हमर कोड आसला इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन सेते बेले जो इंस्ट्रक्शन दिया जाउथला ब्रिटिश पार्लियामेंट रु गवर्नर जनरल मानकू कोन इंस्ट्रक्शन दिया जाउथला जे तमे केमिति पॉलिसी करबा ओडे स्टेट को चलेबा तो वर्तमान से जो सेते बेले जो इंस्ट्रक्शन दिया जाउथला एडा में कहले दीज आर द प्रिंसिपल गाइडिंग प्रिंसिपल और दीज आर द डायरेक्शन टू फॉर्म ए स्टेट पॉलिसी स्टेट तरह पॉलिसी तमे केमिति तयारी करबो ता पई से डायरेक्शन जार ना होची डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो ए दीटा जाक हमर हिजबो करेक्ट आंसर तो बोथ हिजबो करेक्ट आंसर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल consist equal pay for equal work for both men and women Iris हां किंतु पर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पूरा तांकर जो प्रोसीजर कोन कोन अछि सेटा तापर हम देखिले जे ए कांसेप्ट जो अछि हमर आगु कुआ जाय किंतु एग्जैक्टली हम सेटा को उठे के आनथिला आया डायरेक्ट आयरलैंड रो कॉपी करके आनसे किंतु हम इंडिया रे सही वर्जन थिला 1935 रे जो हमें कहू इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया होतला तो सेटा को हमें बीआर अंबेडकर कहले कि पर से जो कांसेप्ट ता हमें देखले आयरलैंड रे अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हिसाब रे सेटा को कॉपी पेस्ट करके हम संविधान रे आनी थोइ दल ओके तो एडा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन कितना नंबर आर्टिकल एडा 39 ओके 39 डी तेनु एथि रे 39 ए जोडा एडा होची प्री लीगल एड टू पुअर ओके प्री लीगल एड टू पुअर एथि रही थांदा 39 डी तो आंसर हिजबो कोन ना 4 हिजबो तमरो करेक्ट आंसर ओके तेनु आमे एबे तो माने यूपीएससी रा क्वेश्चन सब करबा एसएससी लेवल रो भी क्वेश्चन करबा ओके क्लर्क को धरि कि तुमको सिविल सर्विस यूपीएससी जाय क्वेश्चन तमरा पढिया को पड़िबो ओके जानि नथिबो एते पढुथबो तमे लागिबो जे ए जो जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल को कमिटी रिकमेंडेशन बही रे पाइबनी तमे खोजिले भी तमे लक्ष्मीकांत रे पाइबनी ओके पढि जिवो सेमिति ओके 39 सॉरी 43 ऑफ द डीपीएसपी एटा कोन हमर थिला मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटेनिटी रिलीफ सिक्योर ए लिविंग विथ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विथ सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ओके प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटेनिटी रिलीफ हमें कहले जे मैटेनिटी हमरो जो बेनिफिट दिया जाउची 12 वीक रु 26 वीक पर्यंत बढ़ा जायची तो सेटा केते नंबर आर्टिकल हमरो अछि 40 42 ओके सो 42 एडा हमरा नहिए सेति भाई कोडा नहिए एडा होची जो हमें कहले मैटेनिटी रिलीफ कथा में कहले 12 वीक रु पेड लीव दिया जाउची जो माने वुमेन रहिले से माननकू 12 वीक रु एबे बढ़ा जायची केते ना 26 वीक जाय मैटेनिटी रिलीफ तो एटा तमे केते कहलो आर्टिकल नंबर 42 तो एटा जदी 42 हे गला तो तमे काटी दियो 1 तो आंसर कोन बाहर जिवो 2 and 3 हे जिवो ओके नेक्स्ट which of the article in the constitution state Gandhian principle of products 40 अच्छी 40 कौन ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत 48 कौन 48 कौन काउ स्लॉटर प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर कितना नंबर आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर 48 मद बंद करिवा प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल एबे न्यूज रे अछि ओडिसा रे अल्कोहल बंद करिवा कथा कुहा जाउची ओके कितना नंबर आर्टिकल 47 मने रखिथिबा एटा ओपीएससी प्रीलिम रे पढिबो ओके प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल ओके तो एटा कनाडा न्यूज रे अछि आ ओडिसा रो जेते न्यूज रे अछि एटा गोटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 47 होची तमरा प्रोहिबिशन ऑफ लिकर ओके इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक
सेडा कला को छाड़ी कि आउ जो गुडा टॉक्सिकेंट ड्रिंक से गुडा हमर बंद ओके मेडिसिनल ए सब गुडा छाड़ी कि तो आंसर कोन हे जिवो 40 होच ऑर्गेनाइजेशन विलेज पंचायत एडा होच हमरा कोन okay which of the new DPSP was added to the constitution in 42nd amendment act 42nd amendment act रे कोटा to promote equal justice and free legal aid to poor 39A promote international peace and security एडा केते नंबर आर्टिकल 51 okay state need minimize inequalities in income status facilities prohibition of consumption of intoxicants and drinks and drugs 47 okay ता कोडा हमरा ऐड हितला इथरु ना तमे जानि छ जे 1 टा ही ऐड हितला ओके एडा केते थिला हम कहले 39A so 40 कोडा एडा हमरा मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इनकम स्टेटस आई थिंक 38 की 39 गुटिके देखिबो तमे ओके एडा केते नंबर आर्टिकल के मन रखछो state need to minimize inequalities in income status facilities and opportunity 38 okay 38 okay so एथिरे हमरा 42nd amendment act रे कोन कोन ना चारिडा जिंस to secure opportunity and healthy development of the children promote equal justice and free legal aid to poor 39A okay participation of the worker in the management of industry पढी सारी छि IAS रो prelim रे केते 43A okay protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife एडा केते ना 48A okay तो हमरा हिजबो so which among the following is not listed as fundamental duty in the constitution कोडा हमर fundamental duty रे add हे नै to abide by the constitution to protect the sovereignty to pay tax to safeguard the public property कोडा टैक्स दबाटा हमरो नाही ओके तो एडा हमरो पे टैक्स हमरो ओडे फंडामेंटल ड्यूटी रे ऐड करा जाय नाही टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एटा भी हमरो ओडे फंडामेंटल राइट टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जर्व वायलेंस करबानी कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करबा टू रेस्पेक्ट द वुमेन डिग्निटी ओके तापरे टू रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन जते बेले दरकार हम देश पई भी सर्विस देवा पे रेडी रहबा ओके जेमति कि कोविड टाइम रे हमें कहले जे माने डॉक्टर रहिले जे माने नर्स रहिले दे आर फ्रंटलाइन फाइटर हिसाब रे काम करथले तापरे हमें कहले एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ एउडा को प्रोटेक्ट करबा तापरे एडा कहै जाउ छी जे एडा भी हमें कहले जे पेरेंट्स माने कर ड्यूटी टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल आउडे होची कोन तमे एक्सीलेंट करिया को ट्राई करो देश ऑटोमेटिक एक्सीलेंट टुवर्ड्स द एक्सीलेंसी आड़ को पड़े ओके सपोज नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल नहीं के आसिले एटा देश हमर ना हला ना नहीं कि हमें कहबा हमें वर्ल्ड कप एबे जीति के आनिले तो पूरा टोटल ऑल द इंडियंस आर प्राउड फील जो प्राउड फील करूछन ना नहीं तेनो जते बेले समस्त हमें जते बेले निजे ट्राई करबा डेवलप होबा पई देश ऑटोमेटिक डेवलप हो जिबा तमे ट्राई करो निजे डेवलप होबा पई ओके देश ऑटोमेटिक डेवलप हो जिबा ओके तो हमर कोन होबो ना एडा छाडी दे कि आ सबुडा हमर फंडामेंटल ड्यूटी केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे एटा ऐड हेतला फंडामेंटल ड्यूटी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को कमिटी रिकमेंडेशन हमें कहितले ना स्वरण सिंह कमिटी रिकमेंडेशन हमर एटा हेतला ओके एंड केते नंबर पार्ट रे अछि पार्ट 4A रे अछि केते नंबर आर्टिकल आ पई गोटी ही आर्टिकल अछि 51 कोठु आसी छी ना यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन हमरो आसी छी ओके यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन हमरो ए फंडामेंटल ड्यूटी ता आसी छी नेक्स्ट which one of the following fundamental duty provision has laid down all Indians need to show respect to the national flag and national anthem माने 51 रो जो 11 टा अछि A B C D एटा केते नंबर अछि
ओके प्रथमे प्रथमे होची जे हमें नेशनल फ्लैग आ नेशनल एंथम को कौन करबा ना रेस्पेक्ट करबा सो 51 ए सब क्लॉज ए ओके 51 ए रे तो हमर 10टा अछि ता भितरु हमें कहले जो सब क्लॉज ए रे अच्छा बी कौन एडा तो गला हमर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम बी कौन प्रोटेक्ट हमरा यूनिटी इंटीग्रिटी हमरा एटा द नेशनल आइडिया और फ्रीडम स्ट्रगल एवडा कमे सो को ईयर हमरा इनकॉर्पोरेट कराइतला 1976 फंडामेंटल ड्यूटी आर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहा समय रहितला इंदिरा गांधी 1976 वाले इंदिरा गांधी थिले फंडामेंटल ड्यूटी आर बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कोठू यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी कोडा हमरा 1 देवव्रत सुनीता ओके श्रीजय अमित मनोरंजन सुचिस्मिता 1 वेरी गुड फजल सागरिका प्रियदर्शन तो 1 ता ताले कोडी अछि 1 ता डीपीएसपी रा केते नंबर आर्टिकल 39 परीक्षा रे पढिथिला एटा डीपीएसपी रा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस वेरी गुड 49 एक्सीलेंट ओके आर्टिकल 49 होछि तमरा प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस तो 50 कोन थिला आर्टिकल 50 एटा भी ओपीएससी रे पढिथिला वेरी गुड आ तुम तो बढ़िया मन रखिछ सेपरेशन ऑफ द पावर जुडिशियल टू एग्जीक्यूटिव भितरे सेपरेशन ऑफ पावर हमें कहले ओके तो एडा हमर हला कोन ना 49 तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी जोटा ऐड हेतला हमें कहले इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल तो एडा हमर 2002 रे केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे 86th अमेंडमेंट एक्ट रे हेतला ओके so to safeguard the public property and to abjure violence is a fundamental कोन एटा ड्यूटी हमें कहले पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करबा वायलेंस करबा नि हमर फंडामेंटल ड्यूटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इंपोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी आ भितरु कोटा इंपोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी कौन आंसर आ रहा 1 2 3 okay so they remind the Indian citizen that duty towards the society the one to ठीक अछि they warn the citizen against anti-national anti-social activity yes they inspire the citizen and promote a sense of discipline and commitment among them it they help the court in examining and determine the constitution now तो आंसर कौन होगा ओ बड़ा लग गया यार सॉरी so they won the answer kon hobo na 1 2 3 is our correct answer okay so 1 2 3 is our correct answer next hoji with reference to the fundamental duty consider the following statement they are confined to citizen only and do not extend to foreigner all of them are considered moral duty of the citizen of India they are non justiciable हेलो सर पूर्व क्वेश्चन टा चारटा सर ऑप्शन लिखा अछि 10 मिनट
कौन हला चारटा ऑप्शन जो अछि चारटा सर ऑप्शन करेक्ट अछि नॉन जस्टिसेबल ना हम कहले फंडामेंटल ड्यूटी टा नॉन जस्टिसेबल तो वैलिडिटी ऑफ द लॉ को से माने एई केस रे तमे कोर्ट रे जाई केस करि परिबो नाही होटल में तो एटा नॉन जस्टिसेबल जो अछि तो लास्ट स्टेटमेंट टा रॉन्ग अछि सर चारटा सर ऑप्शन पूरा लिखा है लक्ष्मीकांत रे सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी रे चैडा को दे हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वैलिडिटी ऑफ लॉ लिखा है जे यस सर देखो तो ओके ओके सेटा ताल देखिबा किन 1 2 3 ठीक अछि तो एथिरे कोन तो आंसर तो भी 1 2 3 4 नाही 1 2 3 अछि 2 3 4 अछि 3 4 अछि तेनु से देखले 1 2 3 हबो फंडामेंटल ड्यूटी एई स्टेटमेंट टा को 2/3 तो ठीक अछि ओके सर सेटा हेलो सर हां को सर सेटा ऑल ही हबो कोडा ता पूर्व क्वेश्चन पूर्व क्वेश्चन टा को हबो ऑल हबो ऑल 4 हबो आज्ञा तेनु मोर देन 1 ऑफ द अबव हे जबो ताहले आंसर आज्ञा ओके तो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है जी आज्ञा सर प्रियंका कहूछ किए कहूछ प्रियंका आज्ञा आज्ञा सर ताल ठीक थिबो तुम कहूछ माने ठीक थिबो ओके सो सेई केस रे हमर कोन होचे लिखा है नी लिखा है नी सिग्निफिकेंस रे सिग्निफिकेंस रे लिखा है जे देखो कोठी सिग्निफिकेंस रे ओके ताहले हे जवा बोलछन ओके सिग्निफिकेंस रो नंबर 4 पिला काल रट्टा मारी के मन रखछन ओके तेनु चा एटा हबो ऑल ऑफ द अबव हे जो ओके मोर देन अबव हे जो तारो करेक्ट आंसर with reference to fundamental duty कोडा हमरो they are confined to citizen only do not extend to foreigner all of them consider moral duty they are non justiciable 2 3 दा ठीक अछि 1 ता ठीक ना भूल अछि फंडामेंटल ड्यूटी होचे हमरो 1 2 3 all of them consider moral duty of the citizen of India तो मोरल ड्यूटी तो ठीक रहइबा कथा ना सर अलगा सिविक ड्यूटी भी रहउछ तो 1 3 ठीक हो मोरल और सिविक दीटा रहउची तो पार्ट थे ठीक अछि ना ऑल ऑफ देम आर कंसीडर मोरल ऑल ऑफ देम पचारि छी ओके सब गुडा का नहीं तो किछि मोरल आ किछि सिविक ड्यूटी रहउची ओके तो ऑल ऑफ देम जो देइची सेथि पई तो सेडा रहयोनी ऑल ऑफ देम नहीं तो सेथि पई एडा ऑल ऑफ सेथिरे किछि मोरल ड्यूटी अछि और किछि सिविक ड्यूटी सेथि पई 1 and 3 इज करेक्ट आंसर तो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट केवे पास करा गला प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट उन्नीस 71 ओके वेरी गुड 1971 रे which constitutional amendment determined the size of the council of minister को अमेंडमेंट एक्ट रे
जे काउंसिल मिनिस्टर केते जण मिनिस्टर रहिबे हम डिसाइड कर देथिला 91st अमेंडमेंट एक्ट केबे असला 91st अमेंडमेंट एक्ट 2000 अच्छा मैक्सिमम केते रही परिबे हमरा काउंसिल मिनिस्टर 15% ऑफ लोकसभा किंबा हमर स्टेट रे 15% ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ए दीटा काम रही गला कोन ना तमरो 91st Amendment Act okay. Which one of the following constitutional amendment act made president bound by the advice of the council of minister headed by prime minister? OPSC भी पढ़ी थी क्वेश्चन टा जितने हमारा national emergency लागू हुए हाँ एडा को कुह तापर हमें कहबा 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा गांधी कहले इंदिरा गांधी थिलवा समय रे कहले जे काउंसिल मिनिस्टर जहा कहबो प्रेसिडेंट सेटे मानिया पे बाध्य ओके किंतु सेहि थिरे गोटे चेंज करा दिबो जतले 44th अमेंडमेंट एक्ट रे आसीबो गोटे जिंस चेंज करा हितिबो कोन ए 44 अमेंडमेंट एक्ट रे आसीबो ना काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जहा एडवाइस देबे प्रेसिडेंट तो मानिबे किंतु वन टाइम से कोन करि परिबे रिकंसीडरेशन पाई पठै परिबे तो जो सस्पेंसिव वीटो कथा हमें कहले सस्पेंसिव वीटोडा हमर केबे आसीबो ना 44th अमेंडमेंट एक्ट रे ओके 44th अमेंडमेंट एक्ट रे हमर सस्पेंसिव वीटो कथा आसीबो किंतु ता पूर्वरु माने 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हमर हेइथिबो जे काउंसिल मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जहा कहिबे सेटा प्रेसिडेंट मानिया पे बाध्य ओके हमर नेशनल इमरजेंसी भी हमर जो लागू होइतिला इंदिरा गांधी का समय से तबले विथ ओरल जो विदाउट एनी रिटन अप्रूवल नेशनल इमरजेंसी लागल सो जो कैबिनेट रो रिटन अप्रूवल दरकार फॉर इंपोजिशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी एटा कितना नंबर अमेंडमेंट एक्ट रस्तिला 44th अमेंडमेंट एक्ट रे हमरा आसीथिला जे तमे जदी नेशनल इमरजेंसी एटा भी आईएएस रो प्रीलिम रे पढिथिला मने रखिबो जदी तमे नेशनल इमरजेंसी लागू करूछ ताहाले कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर अंकर रिटन अप्रूवल दरकार ओके 44th अमेंडमेंट एक्ट आसीथिला 71st अमेंडमेंट एक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड कोंकणी मणिपुर नेपाली लैंग्वेज इन व्हिच शेड्यूल बस यूपीएससी 2024 रे क्वेश्चन था हां को ओके एटा हमर कोन ना 8 शेड्यूल हमर तो एटा वर्ष हमर 2024 रो यूपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन थिला जे हमर उल्टा थिला जे 71st अमेंडमेंट एक्ट रे नै कोंकणी मणिपुरी और नेपाली केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड हेथि यूपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन थिला केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे कोंकणी मणिपुर और नेपाली ऐड हेतला तो एटा हमर 71st ओके बोडो एटा भी पढिसला बोडो डोंगरी ओके संथाली और मैथिली तो ए जो चारिटा का लैंग्वेज केबे हमर ऐड हैला एटा भी आईएएस रा प्रीलिम रे पढिसला केबे 92 एटा ही मने रखिथिबो 92 अमेंडमेंट एक्ट रे बोडो डोंगरी संथाली मैथिली ऐड हेतला फर्स्ट को माने अमेंडमेंट रे हमें कहबा जो लैंग्वेज हमर थिला प्रथमे केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे फर्स्ट जो लैंग्वेज ऐड करा गला सिंधी केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे एटा ही मन रखिबो सिंधीटा हमर 21st अमेंडमेंट एक्ट रे ऐड कराइला कारण एई थ्रु सबले पडुची जे हमर 8 शेड्यूल हमर एबे न्यूज रे अछि कुई लैंग्वेज हमें कहले कंधमाल रो लोक मानकर पर्टिकुलरली कहउछंती कंधा ट्राइब मानक भितरे कुई लैंग्वेज होची त हमर कुई लैंग्वेज जदी ऐड होची 8 शेड्यूल ऐड हो कारण लैंग्वेज उडा को जो अछि तो एई थिरे सिंधी 21st रे 71 रे हमर कोंकणी मणिपुर नेपाली आ 92nd रे हमर बोडो डोंगरी
GST was introduced as an amendment act 100 first हमें already discussion करिचे तो administrative tribunal एटा ही पढ़ितला which constitutional amendment provided to setting of administrative tribunal in India administrative tribunal टा हमरा केबे आस्थिला 42nd amendment act रे हमें कहले स्टेट लिस्ट रु हटे की पांचटा सब्जेक्ट को हमरा concurrent लिस्ट रे रखले 42nd amendment act कौन कौन थिला सिथरे एजुकेशन फॉरेस्ट वेट एंड मेजर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउडे कौन थिला ना ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हमर थिला ओके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तेन माने रखिबा परीक्षा रे पढिथिला ओडिसा रो तेनु सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इन इंडिया तो एटा हमर 42nd सो पार्ट 14 ए आर्टिकल 323 ए रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे empower the parliament to establish an administrative tribunal. The administrative tribunal adjudicate the dispute and complaint relating to recruitment and condition of the service of the person appointed to public service. तो एटा हमरा कोन ना तमरा 42nd amendment act रे हेतला फर्स्ट amendment act हमरा constitution को केबे आसिला 51 असला तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कौन थिला यूपीएससी रे भी दिथार पड़ी छि ओपीएससी लैंड रिफॉर्म एबोलिशन ऑफ जमीदारी हमरा थिला लैंड रिफॉर्म हमरा थिला तो एथिरे गोटे हमरा नुवा शेड्यूल भी हमें कहले जो हमें कहले शेड्यूल 9 ओके शेड्यूल 9 रे हमरा जोडा को इंक्लूड करा गला तो सेगुडा को ताकू जुडिशियल रिव्यू रु प्रोटेक्शन मिलेला ओके किंतु ए जो जहां भी हमरा आप रे भी क्वेश्चन पडितला जहां भी हमरा 9 शेड्यूल रखा जिवो तो वेदर सेडा जुडिशियल रिव्यू रु इम्यूनिटी मिलुची और ताकू प्रोटेक्ट करा जिवो ना वर्तमान कंडीशन रे कोन तार स्टेटस सबगुडा जहां भी हमें रखिबा 9 शेड्यूल वेदर इट इज immune from the judicial review or protected from the judicial review no तो एटा हमरा एबे नुहे तडा को केस रे आसिला हमें केबे को केस पर को हगला जे इवन इफ सर्टेन थिंग्स जोडा कि अप्रैल 24 1973 पर हमरा आसीबो सेडा हमरा जुडिशियल रिव्यू अंडर रे वेरी गुड सुनीला आईआर केहलो केस तो आईआर जो केहलो को केस रे कुहा जिवो जे इवन इफ सर्टेन थिंग्स हमर परीक्षा रे पढिथिला यूपीएससी प्रीलिम रे सो आईआर केहलो केस रे हमर कुहा जिवो जे इवन इफ सर्टेन सब्जेक्ट हमें रखुच 9 शेड्यूल रे इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एटा परीक्षा रे यूपीएससी प्रीलिम रे भी तमरा पढिथिला मन रखिबो आईआर केहलो को केस रे हमरा हेतला ओके सो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट गोटे थर पढ़ी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट समय प्राइम मिनिस्टर किए थे जी जानी 1951 रे तो प्राइम मिनिस्टर किए थे सो जवाहरलाल नेहरू थे सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटिंग टू द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1978 required the president of India to enact accordance with एटा हम जो कहउतले ओपीएससी प्रीलिम रो क्वेश्चन थिला त को केस रे जेतला हमर नेशनल इमरजेंसी लागू हबो बी काउंसिल मिनिस्टर ना यूनियन कैबिनेट रो मु कोन कहितली हां आंसर होची बी परीक्षा मन रखता रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर नॉट काउंसिल मिनिस्टर भल से ध्यान से मन रखिबो कंफ्यूजन हि जबनी तो एडा हमर रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर मानकर रिटन नॉट काउंसिल मिनिस्टर सेम क्वेश्चन ओपीएससी प्रीलिम रे पड़ितला ओके नॉट एंटायर काउंसिल मिनिस्टर कर नहे कैबिनेट रो रिटन अप्रूवल दरकार So disqualification on the ground of defection for a member of parliament. Okay, तो प्रथमे तो तमे जानि छ एंटी डिफेक्शन लॉ के केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे हमर एंटी डिफेक्शन लॉ आस्तिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट
1985 रे राजीव गांधी का समय आसिला ओके तो राजीव गांधी का समय हमर आसीथिला तो एटा केते नंबर शेड्यूल अछि एंटी डिफेक्शन लॉ हमें कहले 10 शेड्यूल अछि so को केस रे the ground of defection for a member of parliament will not apply in case of split in the original party which is selected if he voluntarily give up he abstain from voting if a nominated member join a political party after 6 months कोडा ना split case रे in case of split जदी पार्टी टा split ही जाउची ताहाले तमरो सेही केस रे तमरो डिफेक्शन हो तो स्प्लिट पाई कंडीशन कोन केते जण मिनिमम तमरो से पार्टी बाहर की गले हमें कहबा पार्टी टा स्प्लिट है केते 2/3 ओके वेरी गुड हमर एडा हमर केते ना 2/3 आगरु थिला 1/3 ओके एबे हमर कोन होची ना हेडा बढ़े की जोटा 1/3 थिला 1/3 रु हमें बढ़े की 2/3 कर देले एडा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे हेतला आगुरु 20 रु जो 30 रु 10 जन डेई पडुथिले तमरो स्प्लिट ही जाउतला एबे कहले 10 जन बहुत कम है 20 जन डेले जाई के हमरा हबो ओके तो हमरा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट मने रखिथिबो 91st अमेंडमेंट एक्ट ओके 91st अमेंडमेंट एक्ट दीटा जिंस मु कोन कहली जे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केते रहबा दरकार ना 15% ऑफ द जदी सेंटर कथा कहबा लोकसभा स्टेट कथा कहबा विधानसभा 15 जति की स्ट्रेंथ हमर विधानसभा तार 15% मैक्सिमम रही परिबो आ उटे होची तमरो जो स्प्लिट हबा केसटा जोटा अगरु 1/3 थिला सेटा हमर कोन हिजबो ना 2/3 हिजबो हमर ओके एंड तमे जानि छ जे एंटी डिफेक्शन लॉ जोटा की 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे असला राजीव गांधी का समय रे 10 शेड्यूल रे अछि को केस रे हमरा हमें कहूचे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हबो डिफेक्टेड हिजबो जने पर्सन जदी he voluntarily give up his membership of a political party तमे गोटे पॉलिटिकल पार्टी रे अछ छाडी के यदि आ गोटे पॉलिटिकल पार्टी के जाउछ ताल तमे डिस्क्वालिफाई हे जबो तम पॉलिटिकल पार्टी गोटे व्हिप जारी करिछि जे हमें एई पर्टिकुलर बिल रे हमें आ बिल रो अगेंस्ट दबा कि फॉर दबा ओके जदी तमे से पार्टी रो विश अगेंस्ट जाई कि वोट दउछ ताहले तमे पार्टी अगेंस्ट रे गलो तेनु तमरा किछि अधिकार नै से पार्टी रहिबार तेणु पार्टी मेंबरशिप तुम डिस्क्वालिफाई हो तो आम ओडिशा रे जेमति के हमें कहले द्रौपदी मुर्मू मैम कर जते इलेक्शन बेले तुम प्रेसिडेंट रो इलेक्शन बेले हमर को माने भाग नियंती स्टेट रो लेजिस्लेचर इलेक्टेड मेंबर भाग नेबे तो कांग्रेस रो सेते बेले हमर एमपी कैंडिडेट जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट किया आइतले के यशवंत सिन्हा किया आइतले ओके तो हमर बीजेपी रो किया आइतले कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू मैम तो सीए तांको पार्टी अगेंस्ट जाई कि वोट देइतला सेटा तमरा केस हेतला तबे जानि छ कटक रो जने एमएलए थिले मोहम्मद मकिन तो तांको जिया थर एमएलए हेछथि ओके तो ए जो हमें कहूचे तमे जदी पार्टी अगेंस्ट जाई कि वोट दउछ ताहले तमे डिस्क्वालिफाई हे जो ओके सिमिलरली तमको पार्टी कहि छि गोटे वोट दबा पई तमे जदी सेदिन वोट दबा को आसिलन विदाउट तमे न जणे छ देह खराब अछि तो गोटे अलग कथा तमे लेटर देइछ मो देह खराब अछि कि कोन अछि सेटा तमे जदी जानि सुनि कि लुचिलो आसिलनी तो सही केस रे जदी जने नॉमिनेटेड मेंबर हमें कहले जे राज्यसभा को नॉमिनेटेड हुअंती 12 जन मेंबर हैविंग स्पेशल नॉलेज लिटरेचर आर्ट साइंस सोशल सर्विस थिबे प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करंती किंतु जदी नॉमिनेटेड मेंबर सपोज तेंदुलकर नॉमिनेटेड हे छंदी 6 मास भीतर जदी से बीजेपी रे मिसी गले कि कांग्रेस रे मिसी गले जदी 6 मास पर मिसिले ताहले कोन हे जिवे ना डिस्क्वालिफाई हे सो एई कंडीशन गुडा को जदी जने नॉमिनेटेड मेंबर join a political party after 6 months disqualified if he abstain from voting in the house contrary to the direction of the political party ताहले disqualify voluntary जदी give up कर देबे ताहले disqualify एबे जो इंडिपेंडेंट मेंबर सपोज ओडिसा रे एई थरा 3 जण इंडिपेंडेंट एमएलए जितिछन जने हमरा बडमा नरसिंहपुर जने धर्मशाला आ जने 3 जण हमरा जितिछन जदी से माने वर्तमान 3 जण आको होछन बीजेपी रा कैंडिडेट जदी से माने बीजेपी रे मिसी गले ताहले वेल डिस्क्वालिफाई हेबे ना हेबे से बीजेपी रा कैंडिडेट तांको टिकट दिया गलानी से इंडिपेंडेंट हियाले जितिले वर्तमान से बीजेपी रे मिसी जदी ताहाले से डिस्क्वालिफाई हेबे ना हेबे मने रखिबो से डिस्क्वालिफाई हे
लोक माने तुमको जदी ताहले से बीजेपी रे कैंडिडेट जन ठिया आइतला ना नै सेठी तो से तांकू वोट न देकी तुमको कहीं वोट देले तुमको सुइटेबल भाबिले बोली वोट देले ओके आ तमे जदी से पार्टी रे बर्तन मिसुच यू आर बिट्रेल द पीपल मैंडेट तेणु तुमर जदी तमे लोक माने को धोखा देलो इफ यू आर जो पीपल माने भरोसा करी तमे देइथिले यू डोंट हैव ए मोरल अथॉरिटी टू होल्ड दैट पोजीशन सेति पई जने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तमे बाहर सपोर्ट देइ परिबो जेतेबेले बिल कोनसी पास हो तमे डायरेक्टली बर्तन बीजेपी रा तमे कैंडिडेट बोली कहि परिबन तमे इंडिपेंडेंट हे कि 5 वर्ष रहिबो जदी तमे बीजेपी रे मिसिला इमीडिएटली तमे मेंबरशिप रे तमे डिस्क्वालिफाई हो सो हां को भी पार्टी रे मिस परिबो इंडिपेंडेंट लोक माने नहल नै तो कांग्रेस को जितै थांदे कि बीजेपी को जितै थांदे काहे कि तुमको जितैले तम पाखे सेमति किसी क्वालिटी अछि बोली तमे जदी सेही पार्टी जाकी मिसुच त माने जो लोक माने तुमको वोट देकी जितैथिले तमे तांकर मैंडेट को बिट्रेल कलो तेनु तमे डिस्क्वालिफाई बिकॉज़ पीपल आर द सुप्रीम इन दिस डेमोक्रेसी हम जो कहू छे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन तो सेति पई जने इंडिपेंडेंट मेंबर जदी कोनोसी पार्टी रे मिसुच भी डिस्क्वालिफाई हे ओके तो एई जो हमें कहिले एडा हमर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 रे 10th शेड्यूल आसीथला एटा भी मन रखियो तमरा which of the following shall not be considered as adequate ground for issue national emergency ପାଇଁ कोउटा हमरा adequate ground नहे OPSC prelim रा क्वेश्चन थिला war थिला external aggression थिला आ कोन थिला armed rebellion थिला ओके इंटरनल डिस्टर्बेंस ता जो हमें कहले जे हमरो इंदिरा गांधी को टाइम में लागू हितला ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस कहि की तो किंतु पर ए इंटरनल डिस्टर्बेंस रो इंटरनल आर्म रिबेलियन था कितने नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे चेंज करा हितला 44th ना अमेंडमेंट एक्ट 1978 का गवर्नमेंट समय रे जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई सो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट समय रे इंटरनल डिस्टर्बेंस टा को चेंज करके हमें इंटरनल आर्म रिबेलियन हेले ही हमें करिथिले ओके तमरा एमदी परीक्षा रे पडिथिला जे 44th अमेंडमेंट एक्ट रे हमरो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस ता चेंज करके हमरो करा जेथला आर्म रिबेलियन ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट सब स्टेटमेंट रे सब पार्ट ठीक अछि कहा को गवर्नमेंट भी मन रखिबो कांग्रेस गवर्नमेंट पडिथिला एडा हमरा कोन हबो ना मोरा जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई कांग्रेस गवर्नमेंट समय रे नु ओके तमु लागो यार 44 तो ठीक अछि रॉन्ग 44 ठीक अछि कि स्टेटमेंट ता आज ए होल होछि रॉन्ग ओके सो नेक्स्ट होछि which of the following item comes under concurrent list of the Indian constitution inter state river trade union citizenship local government concurrent list रे कोठा हमरो आसुछि लोकल गवर्नमेंट तो तमे जानि छ स्टेट गवर्नमेंट रो सिटीजनशिप कोन सेंट्रल यूनियन रे लिस्ट अछि इंटर स्टेट रिवर आउ ट्रेड यूनियन कोन हबो लयात्मिका श्रद्धा प्रभानंदन ए ओके तो हमरा कोन होछि इंटर स्टेट रिवर ता हमरा होछि दीटा स्टेट तेणु आमर एइथरे आमर कोन ना कॉन्करेंट लिस्ट अछि unlawful detention of a person is questioned by the writs of तमे जने लोक को अनलॉफुल डिटेन करके रखि छ अरेस्ट करके रखि छ एटा को हमें जो कहले ना जो रीड्स गुडा को अछि तो को रीड्स रेड आसुछि हाबियस ऑफ कर्पस ओके तो आंसर हबो फर्स्ट हाबियस ऑफ कर्पस ए हिजबो करेक्ट आंसर जदी कोनोसी लोक को इलीगली तमे डिटेन करके रखुछ ताहाले 24 आवर भीतर यू हैव टू प्रोड्यूस देम इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट से चेक करिवे जदी ए लोक को इलीगली डिटेन करके रखा जाय छै ताको रिलीज करिया पे से डायरेक्शन देबे ऑर्डर देबे ओके एंड ए हाबियस ऑफ कर्पस ता तमे गोटे गवर्नमेंट जो अथॉरिटी ऊपर नै परिबो प्राइवेट अथॉरिटी ऊपर नै परिबो ना नै जड़े प्राइवेट इंडिविजुअल रखा जायछि जदी डिटेन करी रखा जायछि बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी अगेंस्ट तमे नै परिबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सर हां
सर से जो लिस्ट रो क्वेश्चन रात्र देखिए और देख इंटरस्टेट आउ ट्रेड यूनियन भी तो आसीबा कथा एटा टिके देख माने सेति पई इंटरस्टेट ता देख कोथरे आसुची मु एक्चुअली ट्रेड यूनियन भी तमर थिबो कंकरेंट सर इंटरस्टेट टा यूनियन हबो इंटरस्टेट ता यूनियन अच्छा इंटरस्टेट ता यूनियन थिबो देख से लिस्ट ता देख सब गुडा के तो मने नहीं किंतु ट्रेड यूनियन ता हमरा इंटरस्टेट कोथरे अछि यूनियन लिस्ट ट्रेड यूनियन ता होछि हमरा कंकरेंट लिस्ट ओके तो से क्वेश्चन ता चेंज करिकि ओके ट्रेड यूनियन तेनु ता भीतर परीक्षा सबले पडुची गोसिक मन रखियो ओके किछि किछि गोटे एमिति ऑन माने क्वेश्चन गोटे पडिबो जोटे सुनि नथियो तनु गोटे थारा से लिस्ट ता मन रखियो सब बेले पडुची ओके तो एटा हमरा आंसर हबो कोन ट्रेड यूनियन एटा नहीं ए दीटा कथा जानिछो एटा हमरा होछि यूनियन लिस्ट रे थैंक यू प्रियंका नेक्स्ट which one of the following are the matter on which parliament has the power to modify provision of the constitution by simple majority तो को जगह रे पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी रे हमरो कॉन्स्टिट्यूशन मॉडिफाई करा जो गोटे हमें कहले जे स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 रे ओके किंतु किछि प्रोविजन अछि जोडा कि सर यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट सेटा तो एका कथा नहीं नहीं कॉन्करेंट लिस्ट होछि जोथिरे बोथ यूनियन और स्टेट डिजिटल लॉ करि परिबे यूनियन लिस्ट होछि एक्सक्लूसिवली यूनियन लॉ करिबा कॉन्करेंट लिस्ट रे बोथ हमरा लॉ करि परिबे हां 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 ओके ठीक है एडा कोन होबो अल्टरेशन ऑफ नेम बाउंड्रीज एरिया ऑफ द स्टेट तो एडा तो हमरा सिंपल मेजॉरिटी 1 ता तो डेफिनेटली हबा कथा तापरे abolition of the second chamber of the state legislature administration of scheduled area appointment of additional judge कौन की कहूचो साना ए शर्मिष्ठा डी लिप्सा ए ओके अकस्मिता ए बोल पिला ए ओके 1 2 3 फर्स्ट तो ठीक अच्छी abolition of the second chamber माने काउंसिल हमें कहूचे लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबोलिश करिया को एडा भी सिंपल मेजॉरिटी रे 3 ठीक अच्छी 1 और 3 ठीक अच्छी तो 1 और 3 तो गोटे ही अच्छी तो हमर कोन ना 1 2 3 हे जिवो करेक्ट ओके सो ए हे जिवो करेक्ट आंसर ओके ए हिजबो करेक्ट आंसर तमे एटा जानि छ सपोज हमें कहले कोनोसी अल्टरनेटिव नेम ओडिसा थिला ओडिसा करबा ओके किबा बाउंड्रीज एरिया ऑफ द स्टेट किबा क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्टेट जोटा कि हमें कहले तेलंगाना नथिला आंध्र प्रदेश रु तेलंगाना क्रिएट करा जबो तो एई केस पई स्पेशल मेजॉरिटी दरकार नै सिंपल मेजॉरिटी हमरडा पास हुए तो एटा हमरो जदी क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट हो अल्टरनेशन ऑफ जो अल्टरेशन ऑफ नेम बाउंड्रीज एरिया ऑफ द स्टेट हला तापरे abolition of the second chamber of the हमर ओडिसा रे तमे जानि छ जे विधान परिषद क्रिएट करिया पई गोटे रेजोल्यूशन पास करते तो ए लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे नुवा तयारी करिया पई जो रेजोल्यूशन पास कराइ छै केते नंबर आर्टिकल लिखाइ छै ओडिसा रे गोटे रेजोल्यूशन पास कराइ छै हमर विधान परिषद क्रिएट करिया पई केते नंबर आर्टिकल एनीवन रिमेंबर निहारिका ठीक कहला गोटे जिंस छाड़ी देछ 69 ना 169 ना 269 ओके करेक्ट आंसर होची कोन 169 ओके मन रखो 169 जेहेतु ओडिसा रे विधान परिषद क्रिएट करबा को हमर कुहा जाउतला तो सेटा होची हमर केते 169 69 तो मन अछि एटा 269 की 169 पिला कंफ्यूजन त मन रखिबो केते ना 169 हमर होची ए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रे हमर जो मेंबर रहिबे मैक्सिमम केते जन मेंबर रहि परिबे मैक्सिमम स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ ऑफ केते आर हबो कथा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉट एक्सीडिंग केते मैक्सिमम हे परिबो ओडिसा रे मैक्सिमम केते हे परिबो विधान परिषद गठन हला 1/3 ऑफ कोन ओके मने रखियो परीक्षा रे यूपीएससी प्रीलिम रे पढितला 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा रे जति की सीट अछि तार मैक्सिमम 1/3 हे परिबो त विधानसभा रे ओडिसा रे केते अछि 147 तार 1/3 केते ना 49 टा जदी ओडिसा रे विधान परिषद क्रिएट हुए ओके तो ताहले विधान परिषद रा मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमर ओडिसा रे केते हबो 49 हमरा हबो ओके which one of the following are included in the directive principle of state policy in the constitution of India तो कोडा हमरा तीनटा हमरा अछि डायरेक्टिव प्रिंसिपल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव हमरा 50 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट हला 49 सो तीनटा अछि who among the following was not a member of state reorganization commission appointed by Pandit Jawaharlal Nehru एटा भी यूपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन थिला किए नथिले पोटी श्रीरामुल हमर नथिले आउ तीन जण हमें एटा को फजल अली कमिशन भी हमें कहूचे तो एथिरे ये चेयरमैन थिले फजल अली केएम पानेकर थिले हृदयनाथ कुंजरो तीन जण थिले पोटी श्रीरामुल ये नथिले ये प्रोटेस्ट करथिला आ तमे जानिछो जे आंध्र प्रदेश रो हमर क्रिएशन करा जिवो जो क्रिएशन ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बेसिस ऑफ द लैंग्वेज बोली हम कहले छु तो तांकर डेथ ही थिवो ओके पोटी श्रीरामुल हमर तांकर डेथ ही थिवो प्रोटेस्ट तो ए तीन जणा का जस्टिस फजल अली थिबे केएम पानेकर हृदयनाथ कुंजरू ए तीन जण हमर थिबे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन under article 368 the parliament has no power to repeal the fundamental right because fundamental right को कहीं कि हमें डिलीट करि परिबा नाही बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमरा एटा केबे आसिला कहले केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 रे ओके तो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस 371 प्रोवाइड स्पेशल पावर एटा ओपीएससी रे पडितला 371 टा जो स्पेशल प्रोविजन कहा को दोचे ओके महाराष्ट्र गुजरात मने रखिबो 371 होची महाराष्ट्र गुजरात तापरे 371 ए होची नागालैंड 371 बी होची आसाम 371 सी होची मणिपुर डी होची आंध्र प्रदेश एफ होची सिक्किम जी होची मिजोरम एच होची अरुणाचल प्रदेश आई गोवा जे होची कर्नाटक ओके तडा तमे मने रखिबो कनकरेंट लिस्ट रे कोडा नाही not included in the concurrent list bankruptcy insolvency हमरा अछि एठी हम लिखि छी bankruptcy और insolvency अछि तापरे contempt of court तापरे mental deficiency prevention and cruelty of animal economic and social planning marriage divorce criminal law तो एगुडा हमरो अछि concurrent तो हमरो एटा कोन हे जिवो सी ओके तार अछि सेटा प्राइस कंट्रोल टा भी अछि सी अछि आज्ञा कोडा नाही तले खोजी को प्रियंका कोडा नाही कैपिटेशन डीटा नाही कैपिटेशन ओके प्राइस कंट्रोल अछि ताले सेतिरे
ओके एटा तो अच्छी एक्शनेबल रॉन्ग अच्छी डीडा नहीं ओके कैपिटेशन ओके लिस्ट रु पढुची सब बेले तेणु मन रखिबो कोथर पढिबो इथरे इन व्हिच ईयर simultaneously election both Lok Sabha and all state legislative were not held केबे हमरा हे नथला ओपीएससी प्रीलिम रा क्वेश्चन प्लान ओके एटा तो ठीक अछि 1971 समस्तंकर 1971 रे हमरा सेते बेले हमरा कोन ना तमर रीजनल पार्टी आसी जायतिला एति बेले तो हेतिला ए तीनटा आकरे हमरा जानिचो साइमल्टेनियसली इलेक्शन हेतिला ओके तो 1971 रे हमरो साइमल्टेनियसली इलेक्शन है इन व्हिच स्टेट द इंडियन यूनियन ह्यूज स्टेट इन इंडियन यूनियन आर्टिकल 35 ए रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर जोटा को हम हटे देचे आर्टिकल 370 जो रिलेटेड टू स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया जाउतला सेही थिरे दिस इज रिलेटेड आल्सो टू जम्मू एंड कश्मीर 35 एटा कोन 35 ए कोन हमरा आ पई यूपीएससी भी 10 मार्क रो क्वेश्चन पड़ितला लैंड किनी परिबिनी ओके प्रॉपर्टी राइट ओके वेरी गुड सुनीला स्पेशल राइट टू द सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो को माने सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो जो सिटीजन स्टेटस ए 35 ए रे दिया जो तो जो माने सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेतिबे दे हैव द राइट टू माने प्रॉपर्टी राइट से माने कर रहिबो और से माने लैंड किनी परिबे से माने इलेक्शन रे ठिया हे परिबे से माने गवर्नमेंट से ठिकार गवर्नमेंट रो जॉब रे सो को माने जो जम्मू एंड कश्मीर फैसिलिटीज पाइबे ओनली दोज हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज द रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बोली हमें कहछे तो सेति पई रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को माने जोटा कि हमरो आर्टिकल 35 ए रे हमरो रहिछ ओके तेणु एटा मन रखियो इवन इफ हमरा कुहा जाउची जे जदी जणे झियो आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मैरिज कला तो ता परे तांकर जो पिला छ मानकर प्रॉपर्टी राइट हमरो रहिबा ओके तो ए जो हमर आर्टिकल 35 ए इट इज रिलेटेड टू द रेसिडेंट स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को माने सेटा म दिया ओके जेहेतु एटा वर्तमान हटे दिया गला एटा नाही तो एबे कोन ना समस्त तमे यू कैन बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर यू कैन सेटल ओके तो से जो रेस्ट्रिक्शन गुडा का थिला तो से गुडा का हमरा हटे दिया गला which of the following article were repealed from Indian Constitution by Constitution 26 Amendment Act 1971 रे कोटा हमरा हटे दिया जायथिला ओपीएससी प्रीलिम रे पढे एमदी आर्टिकल तमे सुने नथिबो ओके तो जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटा करिथबो ही करि परिबो कोन एनीवन नो और आंसर कोन ओके सुनीता ए श्रीजा ए सुनीला वेरी गुड ओके ए होची आंसर ताले मते कुह व्हाट इज आर्टिकल 291 एंड 362 एबे कुह ए दीटा को हमरा हटे दिया जाई छी 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 रे व्हाट इज आर्टिकल 291 कोन थिला एंड 360 एडा यूपीएससी प्रीलिम रे पढितला ई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवी पर्स जे आगुरु तमरा जो मु कहली राजा महाराज माननकु आगुरु तमरा से माननकु पेंशन दिया जाउथि ओके पेंशन दिया जाउथला तो सेही थिरे से जो पेंशन को हटे दिया गला हमें कहले हमरो सेही इंडियन रूलर माननकु तो सेटा हमर होची ए दिटा को हटे दिया जाइछि जो प्रीवी पर्स जोडा रहला राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द रूलर ऑफ इंडियन स्टेट 362 आ प्रीवी पर्स जोडा हमर हटे दिया गला 290 291 ओके
तो एटा होचे हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एनी मोर राइट टू प्रॉपर्टी जोटा 31 रे थिला हमें एटा केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे हटेले ओके कोठी की नहीं छ मेटा को तो एटा वर्तमान स्टेटस ओटे ओनली लीगल राइट ओके फंडामेंटल राइट नो राइट टू प्रॉपर्टी जोटा 31 रे थिला हटे की हमें 300 ए रे रखी छे आ 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एटा में नहीं के जाई which part of the constitution does the concept of welfare state directive principle of state policy right to freedom of religion OPSC prelim रे पढितला freedom of religion केते रु केते 25 ରୁ 28 straight forward question पढितला Gandhian principle or philosophy have been enumerated कोठी directive principle of state policy so C is your correct answer who as per the provision of the constitution declare an area as scheduled area की हम declare करंतु president of India okay president of India हमर हिजबो correct answer okay mandamus is a writ issued by the apex court कौन सेटा पे हमें कहले हबियर्स ऑफ पर्पस सीटा कौन हबो ना हमरा ए हिजबो करेक्ट आंसर एक्सीलेंट समस्त आंसर ठीक अछि ए हिजबो asking a public official or any authority to perform the legal duty तो ए हिजबो हमर करेक्ट आंसर the first state in India which are created on linguistic basis आंध्र प्रदेश तमे जानि छ right to education for all 6 ରୁ 14 वर्ष पिला माने को फंडामेंटल राइट को ईयर रे मरे एटा ऐड करा गला 2002 रे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 रे सो आंसर कोन हिजबो एटा सी हिजबो करेक्ट आंसर ओके सी द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड incorporated in article 44 of the Indian constitution is for तो सी डी भीतर पिलांकर डाउट रहउछि बहुत पिला सी कहउछनी बहुत पिला ओके तो देखो एई केस रे कोन होछि हमरो हमें कहले यूनिफॉर्म सिविल कोड कोन पे ना हम भितरे सब जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रहला हिंदू होंतु मुसलमान होंतु जदी समस्त पई गोटे लॉ हला मैरिज हो डिवोर्स हो जहा भी हो हम भितरे कोन हो गोटे यूनिट रहइबो कि हमरो ओके तो वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी पई नहे तो एडा में कोन करछे ना पर्टिकुलरली सब समस्त पई गोटे हमें जदी लॉ नै के आछे तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को हमें मोर रिप्रेजेंट करछे तेनो एठी हमरा कोन होछि ना नेशनल यूनिटी पे हमें एटा कहि परिबा तो सी हे जो हमरा करेक्ट आंसर ओके सर सेटा वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी में भी होबो वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी irrespective of religious इंति लिखा है तमरो वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी तमरा मुसलमान मानक पई हो समस्त पई जदी गोटे लॉ आसीबो तो समस्त पई गोटे लॉ आसीले हमरा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी होची मोर एप्रोप्रिएट वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी भी होची एथरे कोन कहबा जदी हमें कहबा जे तांकर मैरिज और डिवोर्स अलग आ रहउची ट्रिपल तलाक बिल त सेहि दिबे हमरा हिची ओके वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी भी होची
किंतु मोर जदि आमे समस्तंकर जदि गोटे लॉ नै के आसीबा आमे नेशनल यूनिटी आमे कहबा हम भितरे समस्त पई गोटे लॉ रहला तेनु वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी कथा भी करेक्ट किंतु यूनिटी टाकू आमे देखबार आंसर कोन देई छी कोडी किछ देई छी ओके ठीक अछि तो ये क्वेश्चन टा टिके देखिबा ओके किंतु रहिबा कथा एक्चुअली हमर नेशनल यूनिट को मोर प्रायोरिटी दबा कथा ओके टिके आंसर टा देखिबा टिके कंफ्यूजन अछि त टिके देखिबा ओके सो ठीक अछि आहुरी गुडाए क्वेश्चन अछि हमर तो आमे कोन करिबा ना नेक्स्ट क्लास रे करिबा क्वेश्चन करिबा प्लस हमें खाली पॉलिटी नहीं हमें अलग जो सेक्शन गुडा को भी करिबा हिस्ट्री करिबा एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल प्लस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इकोनॉमी देन एनवायरनमेंट सब गुडा का हमें 1 बाय 1 करिबा सो मु गोटे शेड्यूल तुमको दे देबी को दिन कोन हमरो डिस्कशन हबो केवल मु नहीं आ दि तीन जन हमरा पूरा टोटल रैपिड रिवीजन कोर्स जोटा कि हमें करिबा तो ता छडा हमरा मॉक टेस्ट भी डिस्कशन हबो हमें गोटे काम करिबा कि इवनिंग रे जो टाइम टा रहिबो 5 रु मे बी 7 हमर मॉक टेस्ट डिस्कशन देन 7 to 9 हमें करिबा टोटल ए रैपिड रिवीजन ओके सो दैट हमर मॉक टेस्ट भी चलिबो एंड एटा भी चलिबो सो गोटे प्रॉपर शेड्यूल को दिन कोन हमर डिस्कशन हबो पूरा वीक जकरा हमें शेड्यूल करके मु तुमको प्रोवाइड कर देबो ओके सो थैंक यू एवरी सर से आंसर टा नेशनल यूनिट आसीबो सेटा गूगल रे देखो नेशनल यूनिट ही होबो से आंसर टा हाँ नेशनल यूनिट तो हबा किंतु तमे एटा भी मना करि परिबनी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी जेमति कि हमें कहले जो ट्रिपल तलाक बिल जगु ही हमें कहते ना तांगा मुसलमान लॉ रे सेमन सेटा ये करू नाहंती मानु नाहंती सेति पय यूनिफॉर्म सिविल कोड आनुचे सो दैट सेमान को पय किंतु जदि डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को हमें इंटीग्रेट करूचे तो नेशनल यूनिटी भी ओवरऑल हमरो एथरे अचीवमेंट करूचे तो ए बडा क्वेश्चन होची एम्बिगुअस क्वेश्चन तार आंसर देखिया पड़ियो से माने कोन कहउछन गूगल रे चेक करले आछि नेशनल यूनिटी गूगल रे मु भी लिखि देथिबि ना आर हबो नेशनल यूनिटी ना गूगल रे आंसर कोन ठीक की सब ओके केटा जदि 44th अमेंडमेंट को एक्सक्लूसिविटी नेले सेटा तो मेंशन कर जे रिड्यूस द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज तो सेही हिसाब रे देखिले तिके ए अंडर प्रिविलेज जो ग्रुप हला कि अपन जोड़ा बे कहले मुस्लिम कैटेगरी तो सेटा तिके बेसी इंक्लाइंड होची आंसर टुवर्ड्स आंसर ओके तो देखियो तार आंसर ता किंतु एई बडा क्वेश्चन ना तो डायरेक्टली एम्बिगुअस क्वेश्चन हमको सेटा भी ठीक लगे ओइटा भी ठीक लगे ओके सर एक्चुअली यूनिफॉर्म सिविल कोड रो मीनिंग ता ही ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी irrespective of religion equally treated irrespective of religion equally treated ता मीनिंग ता ही से ओके तो सब सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिलीजन को निया रछि माने ताहले हमर कोन यूनिटी भी आसुनी कि सत्य देखि कहबे नेक्स्ट क्लास रे हां ठीक है हां ठीक अछि थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट टू ऑल